Good afternoon, students. In this particular video session, we are going to discuss about we'll start a new topic. Okay, that is analysis of frames. So in the previous video, we were discussing about the analysis of cables. So we solved few numericals in this particular topic. So I already informed you. Okay, you try to solve different problems on that particular topic. If you have any doubts, you can message me. Okay, you can ask me through phone also. So now we will start the new topic, that is analysis of frames. Once again, even in this particular topic also there is a fixed procedure is there. You need to follow that procedure. Okay, once again step by step procedure rahega, and you need to follow those simple steps. So let's start with the analysis of frames. So first, once again, we'll discuss some introduction part, some basic points related to the frames. After that one, we'll go with some step-by-step analysis, how we are going to do that analysis of the frames procedure. After that, there are some important tips are there which you need to keep in mind, so that while solving numericals, it may be very useful. After that, we will start with the numericals. But for this particular video session, we are going to keep it only with the theoretical part. From next video we'll start with the numerical part. Okay, so chalo start karte hain. It is a frame is nothing but it is a structure consists of a number of straight or bent members which are connected by means of internal hinge, but with at least one member as multi-force member. So that means see, if you see the truss, correct है? Truss आपको पता था, truss is also a structural member, or it is a structure which consists of a number of straight members, not the bent members. But in the frames, both straight and bent members will be available, or which are connected. And once again, these straight or bent members are connected by means of a hinge, internal hinge रहता है. सो यू नो हिंज है, तो हिंज सपोर्ट या हिंज पॉइंट बोलते ही आपको पता रहना चाहिए कि देर आर टू रिएक्शंस कम्स इनटू पिक्चर, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड द वर्टिकल रिएक्शन. एंड if you know in the truss, every member is a two force member, but when it comes to the frames, here also there are two force members will be there, but at least one member will be having the multi force member. That means both टू फोर्स मेंबर नहीं, ज़्यादा मेंबर फोर्सेस रहेगा. ठीक है. सो लेट्स सी यू टाइप्स ऑफ मेंबर्स इन द फ्रेम. सी देयर इज ए टू फोर्स member, that means a member which is subjected to two equal and opposite and collinear forces acting along axis of the member is called as two force member. So you can see here I had shown the diagram. ठीक है. So if this is a member, and if you can see if there is a forces are acting like this, so these two are in the same collinear forces which is same point से line of action same direction same है दोनों का, and it is passing through the axis of the member itself, correct है, and opposite direction में जा रहा है. So either it is tensional हो सकता है या compression हो सकता है. So that means in this particular diagram में दिस इज टेंशनल मेंबर है एंड दिस इज कंप्रेशन मेंबर है. ठीक है. अगर ऐसा है तो दिस इज कॉल्ड एज टू फोर्स मेंबर. व्हेन इट कम्स टू द मल्टी फोर्स मेंबर, you can see here a member subjected to three or more forces is called as multi force member, but the forces are not acting along the axis of the member. So जैसे इसमें ये फोर्स और एक्सिस ऑफ द इवन द मेंबर सब एक ही लाइन ऑफ एक्शन था, बट व्हेन इट कम्स टू द मल्टी फोर्स मेंबर में तीन से ज़्यादा फोर्सेस रहेगा, एंड मेन थिंग इज दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर. ठीक है. सो मेंबर विथ टू और मोर फोर्सेस एंड वन और मोर कपल्स. सो दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन. ये भी हो सकता है, अदरवाइज यू कैन से मल्टी फोर्स मेंबर इज नथिंग बट विच इज हैविंग टू और मोर फोर्सेस एंड वन couple acting on its also known as multi force member. So मतलब तीन फोर्सेस भी हो सकता है, या दो फोर्स और एक कपल भी उधर एक्ट हो सकता है उस मेंबर में. देन दैट टाइप ऑफ मेंबर्स आर कॉल्ड एज मल्टी फोर्स मेंबर्स. So now you got to know difference between the two force member
2 force member and multi force member. ठीक है. So let's go with the analysis part. See, once again, analysis is nothing but analysis of frame is nothing but it is the determination of external reaction components as well as internal forces. That means you are going to find out the forces in the members, whether it is an external force member or internal force members. ठीक है. So external force members means which are acting when it is extra, जो भी external load apply होता है external react होता है. एंड इंटरनल फोर्सेस मीन्स एट इंच पॉइंट्स या पिन रिएक्शन के जगह पे जो भी फोर्सेस होता है दैट इज दोज आर कॉल्ड इंटरनल फोर्स मेंबर्स. सो how you are going to find out these forces or how you are going to do this analysis of frames means, see, these are the some of the steps you need to follow. ठीक है. सो वंस अगेन वेरी सिंपल स्टेप्स है. इफ़ यू जस्ट प्रॉपर से अगर ध्यान से आपको पढ़ाई किया तो एंड विथ वन प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आपको दिमाग में बैठ जाता है. इट्स वेरी सिंपल स्टेप्स. जैसे आपका ट्रस था, केबल था, सो दिस इवन इन दिस ऑल्सो देयर इज अ सिंपल स्टेप्स आर देयर. Okay, let's see. The first step one is draw FBD of entire frame structure without dismembering the frame. Okay, before going into the analysis part, I'll show what is frame. These are some of the examples of frame, or you can see this is the best example. These are the frames and these are made up of either wooden structures, all these things. Okay, so this is one frame. You can see this is one frame and it is having some supports and there is a hinge here. Okay, because two members are connected at this location is called as hinge. Correct? Connected through hinge. Clear? So you can see there may be some other. Okay, there is one support here, there is one support here. Correct? And you can see this is one member. One second, this is one member and this is one member. Correct? And both are connected at this location. This is hinge. तो बाद में आता है उसको. Okay, so that means we'll start with the step. So once again, the first step is draw FBD of entire frame structure without dismembering the frame. So that means whatever the frame is there, you can see here. So if you observe carefully, this is a frame and this is dismembering the frame. तो मतलब ये और ये जो कनेक्टेड था उसको सेपरेट किया है. तो दिस इज कॉल्ड एज डिसमेम्बरिंग. So what he is asking is, in the first step what you have to do is you need to keep it like this only and draw the FBD जैसे मैंने इधर लिखा हूँ. So don't separate it like this. ठीक है. So that is the first step. In the second step, apply three conditions of equilibrium: summation of x is equal to 0, summation of y is equal to 0 and summation of moment is equal to 0 to entire frame structure. So that's why I told it's once again very simple. If you see this particular diagram, this is the entire. So there are this there is reaction, there is a reaction, there is a reaction. Correct? So there are different forces are there. By seeing this one, this is coplanar non-concurrent force system है. So that means एक सेकेंड. ठीक है. So that is what I was telling. By seeing this particular diagram, you can see this is a coplanar non-concurrent force system है. इसलिए you need to apply summation of x is equal to 0, fy is equal to 0 and moment is equal to 0 for the entire frame structure. Then once again, when you apply this one, there are some unknown forces you are going to find out. That two steps over. The third step. Now what you have to do is, now you dismember the frame from internal pins and draw FBD of each multi-force member separately by assuming equal and opposite reaction components at common points. So that means, see, what you have to do is, now in the third step you need to separate those frame. अलग अलग स्ट्राइक मेंबर्स रहने दो, बेंट मेंबर्स रहने दो. जो इंटरनल इनसे कनेक्ट हुआ है उसको अभी आप डिसमेंबर करो. And once you do that one, you draw the FBD of each multi-force members separately. That means whatever the members are there, उसके लिए आप फिर से अलग अलग FBD निकालो. जैसे कि आप दो सेपरेट अगर ऐसा किया, you can see here, जैसे इसको सेपरेट करोगे, ये दो था, सेपरेट करोगे तो ये ऐसा एक आएगा, ये ऐसा एक आएगा. तो इसको भी आप सेपरेटली यू ड्रॉ द FBD. ठीक है. देन
of each multi-force member separately by assuming equal and opposite reaction components at common points. So इसका मतलब क्या है कि अब देखो in this particular diagram the common point is this C, correct? You can see here C. That means C point is common for this frame also, and it is common for this frame also, correct? So when you draw this frame and this frame separately, so this C is common point in the both the frames. So उस जगह पे आपको क्या करना है, equal and opposite force system लगाना है. So this is a hinge, so there are two forces will be there, correct? So if you are taking this frame, so you can see I am writing HE इस तरफ और VE इस तरफ, ठीक है? You observe the direction. So VC को मैं डाउनवर्ड लिख रहा हूँ और HC को राइट साइड लिख रहा हूँ. तो व्हेन आई टेक दिस फ्रेम, करेक्ट है, तो उसमें मैं वंस अगेन HE को ऐसा अपोजिट में लिख रहा हूँ, ये VE को ऐसा लिख रहा हूँ. एक्चुअली ये ऊपर लिखना था, इक्वल एंड अपोजिट लिखना है, ठीक है? सो कॉमन पॉइंट पे आप यू शो द फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज दिस VE सेम है, सॉरी VC एंड दिस HC सेम है. ये डाउनवर्ड आ रहा है तो ये अपवर्ड जाने का, या राइट साइड आ रहा है तो ये लेफ्ट साइड आने का, ठीक है? सो दैट इज व्हाट ही वाज टेलिंग. सो नाउ हो गया ये और ये हो गया. स्टेप 4, apply 3 conditions of equilibrium to each multi-force member starting with summation of moment at 0 at internal hinge from where the frame is disconnected. So now what you have to do is you need to apply जैसे आप इसको separate किया, जैसे इसको अभी separate किया, तो you need to apply summation fx is equal to 0, fy is equal to 0 and moment is equal to 0, because once again coplanar non-concurrent forces है. अभी इसमें क्या करना पड़ता है, और you start with the once again summation of moment इज इक्वल टू 0, बट कहाँ पे लेना है, जहाँ पे कॉमन पॉइंट था. कॉमन पॉइंट इज C, करेक्ट है ना? तो यू टेक समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट C इज इक्वल टू 0. सो इधर क्या करना है, अलग अलग मेंबर्स को करना है. सो जैसे कि आप देख सकते हो, यू नीड टू टेक वन मेंबर एंड यू अप्लाई मोमेंट अबाउट C इज इक्वल टू 0, देन समेशन एफ एक्स, देन समेशन एफ वाई लगा सकते हो, ठीक है? सो यू कैन सी हियर अप्लाई द, ये हो गया ये apply the 3 conditions of equilibrium to each multi-force member starting with moment about 0 at internal hinge from where the frame is disconnected. Okay, find out all the reaction components and internal forces in its magnitude and direction. If for assumed quantities, when solution yields negative answer, the sense of the force is opposite to that which was originally assumed. So this point आपको पता है, जैसे कि आपको आपने HA इस डायरेक्शन में लिया था, बट HA का वैल्यू आपको माइनस में आया, सो दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग है, तो आपको लेफ्ट साइड में लेना था, बिकॉज नेगेटिव आंसर जब आता है जब आपका डायरेक्शन आपने गलत अज्यूम किया है, तो ठीक है? सो दैट मीन्स वेरी सिंपल है. बाई इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम को लेके मैं पूरा प्रोसीजर एक बार रिपीट करता हूँ. तो फर्स्ट क्या करना है, यू नीड टू टेक एंटायर फ्रेम स्ट्रक्चर एंड यू अप्लाई FBD, दैट इज FBD ड्रॉ करो, करेक्ट है? सो वंस अगेन सब ड्रॉ करने के बाद it is coplanar non-concurrent force system रहता है. you apply summation fx, summation fy and summation of moment is equal to 0 and you find out some unknown forces, ठीक है? उसके बाद what you have to do is you need to dismember the frame. जैसे इधर dismember किया है वैसा dismember करना चाहिए, और dismember करने के बाद जहाँ पे common point रहता है उस point को आप उस point पे आपको equal and opposite reactions दिखाना पड़ता है, करेक्ट है? देन इंटरनल इंज पे जहाँ पे भी है दीज आर टू फोर्स मेंबर रहता है. उसके बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू टेक इंडिविजुअल मेंबर्स एंड यू अप्लाई समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इज इक्वल टू 0, बट यू स्टार्ट विद द समेशन ऑफ मोमेंट एट कॉमन पॉइंट, ठीक है? दैट इज दिस पॉइंट पे मोमेंट लगा के चालू करना है एंड यू फाइंड आउट दस वट एवर द फोर्सेस अननोन फोर्सेस आर देयर. पहले स्टेप में कुछ HAV आएगा, दूसरे इसमें VC आएगा, तो ये हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. बट अभी देखो आपने ये फाइंड आउट किया है, बट आपको ये मेंबर भी लेके यू कैन क्रॉस चेक द वैल्यूज, बिकॉज यू नीड टू फाइंड आउट द, समझो आपका VC वैल्यू इधर से मिला है,
कुछ तो इधर भी क्रॉस चेक करके दे सकते हो, दिस वी सी वैल्यू एंड दिस वी सी वैल्यू हैज़ टू कम सेम, सिमिलरली दिस एच सी एंड दिस एच सी हैज़ टू कम सेम, सिमिलर दिस टी एंड दिस टी हैज़ टू कम सेम। तो ये नॉर्मली क्या करना है, अगर आपने एक फ्रेम कंसिडर किया है तो दूसरा फ्रेम आपको क्रॉस चेक करने के लिए ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन केबल सिस्टम, सॉरी फ्रेम स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट मैं इधर वो सब पॉइंट्स लिखा हूँ। सो स्टेप 2 3 4 5 हो गया। सो नेक्स्ट इज ड्रॉ फाइनल एफबीडी फॉर ईच मेंबर सेपरेटली विथ करेक्ट मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन, दैट इज व्हाट, अगर आपका वो आंसर माइनस में आया था उसको डायरेक्शन चेंज करके जो फाइनल एफबीडी रहता है वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड स्टेप 7 इज चेक, वी मे क्रॉस चेक आवर सोल्यूशन बाय चेकिंग समेशन एफएक्स एफवाई एंड मूवमेंट एट बाय टेकिंग द अनदर क्या बोलते हैं अपोजिट वाला फ्रेम वाला, करेक्ट है। वी मे क्रॉस चेक आवर सॉल्यूशन बाय चेकिंग एफएक्स एफवाई एंड मूवमेंट एट एनी पॉइंट विच मस्ट बी जीरो फॉर ईच मेंबर। ऑब्वियसली देखो ना, अगर आपको इस पॉइंट लिया, करेक्ट है, सो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम आना ही है, ये अगर डाउन डॉट जा रहा है तो ये ऊपर, तो ये माइनस में आया तो ये प्लस, तो ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली ये और ये अपोजिट में तो ज़ीरो आना चाहिए, तो ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो, क्लियर है। सो दिस इज द स्टेप्स फॉर द एनालिसिस पार्ट एंड एफबीडी ड्रॉ करते समय देर आर सम स्टेप्स आर देर, वो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगा। दैट इज़ द एफबीडी ऑफ एंटायर फ्रेम कैसे लिखते समय एफबीडी कैसे ड्रॉ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इंटरनल इंच एक्सटर्नल इंच इंटरनल मेंबर एक्सटर्नल मेंबर कब बनाना है और वो सब पॉइंट्स है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो दीज आर ऑल सम इम्पोर्टेंट टिप्स है। वो होने के बाद ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा प्रोसीजर बताते समय एक्सप्लेन किया हूँ कि एफबीडी कैसे लिखते हैं। उसके बाद देर आर सम डिफरेंस बिटवीन द फ्रेम एंड ट्रस, थ्योरी में 3-4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में, देन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।